Today our topic is dielectric. With reference to conduction of electricity, हम लोगों ने देखा है there are two type of material classification. One which has free electrons, and if we apply potential difference, the electrons move because of the force applied by the source. But there are other material which do not allow movement of the charge within them. We call them insulator. These insulators are also known as dielectric. So dielectric is the material which do not allow electricity to pass through. The reason, it does not have free charges, free charge particles. Okay, now what type of molecules make dielectrics? There are molecules, insulator molecules. These insulator molecules, again, we classify it into two type of insulators. That is two type of dielectrics. Both are not having free particles to move. But even then, there is a classification. Classification of dielectrics. So first dielectric, insulators which do not have free charges for conduction of electricity. Conduction of electricity, motion of charges. Okay. Now, these dielectrics, there are two types of dielectrics. These two type of insulators, we call them polar and non-polar. पोलर एंड नॉन पोलर. पोलर और नॉन पोलर ये किस तरह के डाइलेक्ट्रिक होते हैं, इसको जरा देखिए. डाइलेक्ट्रिक इज ए कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड इज मेड with bonding. There may be more than one atom in it. Like sodium chloride is a molecule. Sodium has a positive charge, chlorine has negative charge. Similarly, H2O has one H, one O, one O. Okay. Polar and non-polar. Polar means we have read about dipole. Two opposite charges at certain distance, fixed distance, make a dipole. That is pole. That is dipole. Any molecule which show this property, this characteristic, two opposite and equal charges at certain fixed distance, is dipole, and such insulator, such dielectric will be known as polar dielectric. Like, I give you example, H2O. O, and here is H. You know, there is certain angle between them. Now, O has got which type of charge? Negative? Okay. Negative. And these two have got positive charges. If we take center of all the negative charges on O, and if we take center of all the positive charges on this H as well as on this H, we will find that here is center of negative charges and here is center of positive charges. There is a certain distance between them, fixed distance. So minus Q plus Q with a distance 2L, what does it form? A dipole. That means this is a sort of
dipole which has got a characteristic of dipole moment it has. So these molecules are having dipole. Have dipole moment P. Okay, हैं ये क्या? Insulators, dielectrics. There may be other type of molecules, say CO2. In CO2, what we get? COO. In this, the center of negative is here. The center of all positive is here. Negative and positive both are at the same place, and therefore there is no distance between them. Then what is their dipole moment? Dipole moment 0. There are these particles, okay, then H2, O2, N2. In all these, center of positive and center of negative are at the same location. There is no distance between them, so they do not have dipole of their own. These are having dipole of their own. So these are asymmetric molecules, these are symmetric molecules. So symmetric. Do not have dipole moment of their own. Do not have dipole moment of their own. And here okay. Now either of the two, these are placed anywhere, they will have dipole moment, no dipole moment. Now what we do, we create an electric field and put this dielectric in them. We expose this dielectric to an external electric field. What will happen? How do we make an external electric field? Let's have two plates here. And we put this material here. When we put first this is non-polar molecule. Non-polar molecules are here. What will happen when a non-polar molecule is placed here? Here is electric field E, external. The nature of electric field is it applies force. It applies force on the positive charges in the direction of electric field, and it applies force on the negative charges in a direction opposite to the electric field. So when we place a molecule over here, this molecule experiences force, but it is made of positive and negative both type of charges. So positive are pulled in the direction of electric field, negative are pulled opposite to the direction of. Yes, now you see here is positive, here is negative. Both are having center at the same place. As soon as we place it in the electric field, it is pushed on this side. This is pushed on this side. Now, plus and minus, they have certain distance between them. This distance is developed. फिर से, plus and minus both have got center here. When we apply electric field here, plus goes here and minus goes here. Now there are two poles, positive center here, negative center here, and there is a distance between them. It is now converted into dipole. Earlier what was? Do not have dipole moment. Now it has a dipole moment. So
any dielectric, when it is placed in electric field, it develops its own dipole moment. Okay, what happens to the polar one? The polar, as such, it has its dipole moment. So when we place it in electric field, it aligns itself along the electric field. ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इसको ऐसे डाला, इसका प्लस सेंटर इधर है, माइनस सेंटर इधर है. जैसे ही हम उसमें डालते हैं ये घूमता है ऐसे, ऐसे हो गया, प्लस इधर खिंच गया माइनस की तरफ और इसका माइनस प्लस की तरफ खिंच गया. ये अपने आप को अलाइन कर लेता है. दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे सब अपने आप को ऐसे लाइन से अलाइन कर लेते हैं. सो व्हेन इट इज एक्सपोज्ड, we place here the dielectric material. What happens? The molecules become like this. Shape of molecule do not. We are representing only charges. These minus will attract plus. These plus will attract minus. अगर इन्होंने माइनस को खींचा तो रिपेल किसको करेंगे? प्लस को. प्लस यहाँ आ गया, ये प्लस इसके माइनस को खींचेगा और रिपेल करेगा प्लस को, और ये प्लस इसके माइनस को खींचेगा, रिपेल करेगा प्लस को, और ये प्लस को ये माइनस खींच लेगा. सो वी गेट ए कॉन्फ़िगरेशन लाइक दिस, ए डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस, एंड दिस हैपन्स विद द डाइलेक्ट्रिक्स. प्लस माइनस. ओके, अर्लियर when there was nothing, it was not there, when we put it, then this formation happens. Now what has happened? A dipole moment has been created in all the molecules under electric field. So what is the effect of electric field on dielectric? Answer: a dipole moment. Every molecule develops a dipole moment and it aligns itself along the electric field. This is effect of applying electric field to a dipole. Okay, let's write it. So when exposed to electric field, I will write here external. This is important. When exposed to external electric field, the molecules positive and negative centers are forced to develop distance between them because both are stretched. They are forced to develop distance between them and they convert to dipole because now this 2L is created and this dipole will have certain moment, dipole moment. When they become a dipole, then they align themselves. ऐसे घूम जाते हैं and घूम के क्या करते हैं? अपने आप को align कर लेते हैं. They align themselves along the electric field. This scene develops there. Now, when this scene develops, what happens? This is what happens with a dielectric. Okay. So now when you understand this physical condition, what is the other effect? In this, we have given it charges plus minus. Here it is minus, plus, minus, plus, minus, plus. Plus to minus this, plus to minus is the direction of electric field. Please see, on this plate, this is plus, this is minus. This is the electric field. This is the electric field originally we applied on it. Now these are the molecules. What is the direction of electric field within the molecules? Plus 2, minus, plus 2, minus, plus 2, minus. So there is electric field developed here.
This electric field we will call electric field induced because it is developed because of application of this electric field. Okay, so now we find there is a E induced. Okay, now from where does E start? Electric field. Answer: E starts from a positive charge and at the negative charge. That means this set of molecules have created an electric charge here, positive, and it has created a negative charge here. Suppose here there were 10 negative charges and there are 5 rows here or 4 rows here. How many positive charges are developed here? 4. These were minus 10. How much is the charge on this plate now? Minus 10 plus 4 is equal to minus 6. The charge has decreased. फिर से देखिए, this was 10 plus and how many minus have been developed? 4. Now what is the net charge here? Yes, the charge density due to dielectric changes. Okay, that means a dielectric can develop a particular charge density on the two plates. इसको छोड़ दीजिए बाहर वाले को. अगर हम बाहर वाले को छोड़ दें तो ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसने यहाँ पर एक चार्ज डेंसिटी पैदा कर दी. कितनी? माइनस सिग्मा. और इधर कितनी पैदा कर दी? प्लस सिग्मा. इंड्यूस्ड चार्जेस. तो डाइलेक्ट्रिक क्या करता है? डाइलेक्ट्रिक चार्जेस को इंड्यूस करता है ऑन द सरफेस. ओके, अब क्या इस डाइलेक्ट्रिक ने बीच में चार्जेस इंड्यूस किए? माइनस प्लस नो चार्ज, माइनस प्लस नो नेट चार्ज, माइनस प्लस नो नेट चार्ज, माइनस प्लस नो नेट चार्ज. नेट चार्ज सिर्फ कहां पर आया? सरफेस में. नेट चार्ज सिर्फ कहां पर आया? सरफेस में. जब चार्जेस अंदर में होते हैं वी कॉल देम इट हैज गॉट वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, और जब सरफेस पे होते हैं देन इट हैज गॉट सरफेस चार्ज डेंसिटी. नाउ यू कैन टेल मी दैट डाइलेक्ट्रिक्स आर producing which type of charge density? Surface charge density or volumetric? Yes, the dielectrics are filled up on the surface or in the volume. सोचिए, the dielectric is filled up in the volume. उस पूरे के अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया, लेकिन उसने चार्ज डेंसिटी कौन सी बनाई? सरफेस पे. भरा हमने इस पूरे को डाइलेक्ट्रिक से, पूरा भर दिया, लेकिन चार्ज सिर्फ कहां डेवलप होते हैं? राइट. और ये भरता किसको है? पूरे वॉल्यूम को. सो डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड अप इन द वॉल्यूम बट इट डेवलप्स सरफेस चार्ज डेंसिटी. सिग्मा, ये डेवलप किसको करता है? सिग्मा को. ओके, नाउ द ओरिजिनल चार्ज वाज सिग्मा. ओरिजिनल सिग्मा इंड्यूस्ड माइनस this gives the sigma net. So what happens to the net charge? The net charge decrease. ये समझ आ गया? So whenever we put a dielectric within the two charge plates, the net charge decreases.
what happens to electric field? Now, EO original, EI induced minus, why minus? Because EO is in this direction and E induced is in this direction. So E net, E नेट बताइए, E ओरिजिनल से डिक्रीज्ड है कि इंक्रीज है? E net is less or more than E original. E original से ये कम है कि ज्यादा है? कम है, क्योंकि कुछ इसमें से माइनस हो गया, इसलिए ये कम हो गया। समझ आया? ये अगर इधर 100 था, ये इधर पैदा हुआ 40, तो ये कितना बच गया? 60। जब हम इसको नापने जाएंगे डाइलेक्ट्रिक के साथ तो हमको कितना दिखेगा? 60, क्योंकि 100 को उसने 40 माइनस कर दिया। तो डाइलेक्ट्रिक क्या करता है? डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करता है। हमेशा याद रखिए, डाइलेक्ट्रिक का काम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करना। कैसे डिक्रीज करता है? इंड्यूस चार्जेस बनाता है, एक उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर देता है। ठीक, अब इसमें एक चीज डेवलप होती है, पोलराइजेशन हो जा रहा है मॉलिक्यूल्स का। ये जो पोलराइजेशन होता है, इसका हमने एक मेजरमेंट बनाया। वो मेजरमेंट, द डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड dipole moment developed P is equal to, or we can say is proportionate to E. जितना इसमें हम E लगाएंगे, यानी जितना ज्यादा ये फोर्स लगाएंगे उतने ज्यादा मॉलिक्यूल उसके सीधे होके पोलराइज हो जाएंगे और उतना डाइपोल मोमेंट बनेगा। सो द डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनेट टू व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। ठीक है? नाउ वी कैन मेक इट इक्वल बाय गिविंग ए कांस्टेंट, and that constant is susceptibility. Yes, ये एक नया शब्द है, susceptibility. Electrical susceptibility. And what does this tell us? Electrical susceptibility is P upon E. अब अगर हम इसमें E को 1 कर देंगे, E is 1, then susceptibility is P. E is equal to 1, then E is equal to 1, then psi is equal to P. And this we call electric susceptibility of this dielectric material. Electric susceptibility. Okay, now write it down. Electric susceptibility of a dielectric.
This is electric susceptibility. किसकी? Electric susceptibility of a dielectric. Okay. So फिर से फाइनली रिजल्ट हमको क्या मिलता है? व्हाट इज डन बाय डाइलेक्ट्रिक? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीज्ड. नाउ इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीज्ड we get another quantity, and that quantity is dielectric constant of that electric field. See what is dielectric constant is. We are applying an electric field EO because of induction. This decrease. Okay, decrease होकर ये कितना हो गया? Decrease by EI and E is net. Electric field. This is lower electric field, decreased electric field. Now this ratio E naught upon E is called dielectric constant. Every dielectric decreases the electric field to certain extent. Up to which extent it has decreased, that is known as its dielectric constant. ठीक है, जितने गुना वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देगा, that we will call dielectric constant, और इसका हमने एक सिंबल बनाया K. This K is standard symbol for dielectric constant, right? So here E naught is equal to K E, or E is equal to E naught upon K. ये दोनों रिलेशन याद रखिएगा. This we are going to use again. This is effect of electric field. Now when we are trying to apply it to a capacitor, what happens? How does it affect capacitance? We have a capacitor here. This is electric field in it. This is the distance, area, and it has capacitance is equal to Q upon V. Okay, now we did it. Q is equal to sigma into A, and what is V? E into D. We know this. Suppose we have put a dielectric in it. Which quantity will change? डाइलेक्ट्रिक किसको चेंज कर देता है? यस, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देता है? डिक्रीज. ओके, कितना कर देता है? दिस वाज द ओरिजिनल, दिस वन. ओके, नाउ with dielectric of dielectric constant K, E will decrease, E will develop as E naught upon K.
अब उसका E कितना बन जाएगा, E नॉट अपॉन K। समझ आया? नाउ न्यू कैपेसिटेंस, C dash is equal to sigma A upon E naught upon K D. This is equal to K sigma A upon E naught into D. This is equal to K sigma A, and we know E naught is equal to sigma upon epsilon naught into D। ये आपको मालूम है, पैरेलल प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा नॉट अपॉन E होता है, राइट? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो sigma sigma cancel, and what we get here, K epsilon naught A upon D. This is C naught. C naught means what? There is a medium in between. There is a dielectric in between. And what is K? Dielectric constant of that medium. Now, a dielectric always decreases the electric field. That means the value of K is always more than 1. Understand? For free space, K is equal to 1. So, अब हम C dash का ये फॉर्मूला याद रखते हैं। If K is always more than 1, तो डाइलेक्ट्रिक डालने से हमेशा कैपेसिटेंस का क्या होगा? कैपेसिटेंस विल ऑलवेज इंक्रीज, क्योंकि यहाँ के न्यूमरेटर में इफ इट इज मोर देन 1, ओरिजिनल C कितना था? ओरिजिनल C का फॉर्मूला आपको याद है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और विद डाइलेक्ट्रिक ये C कितना हो गया? K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, K टाइम्स मोर। नाउ इफ वी हैव द रेशियो ऑफ द टू, C dash upon C is equal to K, और C dash is equal to K times C। किसी भी कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक डालिए, उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स? K टाइम्स। द कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। दिस इज द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ओके, नाउ ओके, दो चीजें जो डाइलेक्ट्रिक वर्ड को यूज करती हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक। वन इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अदर इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है बिकॉज बोथ आर यूजिंग डाइलेक्ट्रिक। इसको याद रखिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि आयोनाइज कर देता है, एयर को तोड़कर इलेक्ट्रॉन अलग कर देगा उसका। इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसको तोड़ दे, वो क्या कहलाता है? उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यानी उसका वो लास्ट वैल्यू जिसको ये बिना टूटे बियर कर लेगा, अगर उससे बढ़ा देंगे तो क्या होगा? टूट जाएगा।
So this is the maximum strength which can be withstood by a dielectric before it gets ionized. That is dielectric strength. इसलिए इसका यूनिट क्या होता है? dV by dr, वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. 12 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर लगाएंगे. 12 किलो वोल्ट, 12,000 वोल्ट पर मिलीमीटर, तो माइका क्या कन्वर्ट हो जाएगा? कंडक्टर में. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा. रबर, क्या रबर कंडक्ट करता है? नहीं करता. कब तक नहीं करता? 1 मिलीमीटर में कितना वोल्ट लगा दें? 12,000. इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कि अब वो टूट जाएगा, उसके इलेक्ट्रॉन अलग होंगे, फ्लो होना शुरू हो जाएगा. तो उसने कब तक रोका? 12,000 वोल्ट तक रोका. दैट इज स्ट्रेंथ. जैसे ही 12,001 हुआ, टूट गया, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी कहलाएगी? 12,000. वैसे ही अगर हम लेते हैं ये स्ट्रोंशियम टाइटेनेट, 8 किलो वोल्ट लगाएंगे, ये टूट जाएगा, तब तक इंसुलेटर रहेगा. ये चीज क्या है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. सो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज maximum value of electric field it can withstand before getting ionized. ये होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. देन व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज रेशियो. एक तो ये चीज याद रखिए, ये क्या चीज होती है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है. और ये क्या होता है? सिर्फ रेशियो. इसमें आप देखेंगे कोई यूनिट नहीं है. कि क्यों? बिकॉज इट इज रेशियो ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स, जो हमने ओरिजिनल लगाया था और जो ये बच गया, रिजल्टेंट नेट. ये जो इसका रेशियो है, ये क्या कहलाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. यही चीज क्या होती है? किसी भी कैपेसिटर की 2 प्लेट में हम इसको डालेंगे, जितने गुना उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, जितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, दीज टू आर एंटायरली डिफरेंट थिंग्स. और याद रखिए, इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है फाइनल एग्जाम में. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? ठीक है, इसलिए ये आपको दोनों सेपरेट याद रखने हैं. और ये इनकी वैल्यू से हमको क्या पता लगता है? हमको बहुत लालच लगता है कि एक कैपेसिटर के बीच में हम पानी डाल दें. पानी डालेंगे तो उसका कैपेसिटेंस कितना टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा? K80 है, इतने टाइम्स उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा. पर होता नहीं है. क्यों? क्योंकि वो तो ब्रेक डाउन हो जाता है, 0 वोल्ट पे ही ब्रेक डाउन हो जाता है. तो हमको दोनों चीज देखनी पड़ती है. ब्रेक डाउन वोल्टेज शुड बी हाई एज वेल एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ शुड बी मोर. थर्ड चीज जो हम देखते हैं वो ये है कि वो कॉस्ट इकोनॉमी उसकी है या नहीं है. सो मोस्टली व्हाट वी यूज इज पेपर, माइका एंड रबर, glass. These things we are using for dielectric within the capacitor plate, so that its capacitance increase by 7 times, 6 times, 4 times, 5 times, so many times capacitor increase, and it does not break down up to 12,000 volt per millimeter, which is a very strong dielectric constant, dielectric strength, right? So this is all about dielectrics. दिस इज यूज्ड इन कैपेसिटर्स. और अब से हम कैपेसिटर के फॉर्मूले में इसको कहाँ इंसर्ट करेंगे? आप ऊपर कर चुके हैं. हमेशा हम लोग लिखेंगे C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D
व्हाट इज दिस? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. कितनी जगह पर भरा हुआ है, कितनी विड्थ में, डी विड्थ में भरा हुआ है. दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट.